Okay. So starting off with your paper 2 topic number 3D, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा क्वांटम फिजिक्स and it is all based on the world's most famous physicist himself being Albert Einstein, including his discovery on different miracles of particles, scientific topics, scientific breakthroughs. For example, his very first Nobel Prize was in 1921 जहाँ पे he introduced the photoelectric effect, then behavior of particles in light as electrons and एक दूसरे को link करना, and still many scientists cannot reach up to that level where Albert Einstein actually gained his research. So what is the wave particle duality? Huygens principle कहता है that there was a Dutch scientist, Christian Huygens, who came up with a principle for predicting the future movement of waves if we know the current position of a wavefront. The basic idea is to consider that any and every point on the wavefront is a new source of circular waves traveling forwards from that point. And when the movement of these numerous circular waves is plotted, their superposition is considered, and the resultant wave will be the new position of the ओरिजिनल वेव फ्रंट. हर वेव फ्रंट के ऊपर एक सर्कुलर वेव भी प्रोड्यूस होती है. एक तो ये वेव फ्रंट्स जा रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. हर वेव वन के ऊपर भी एक एक सर्कुलर वेव है, और वो सर्कुलर वेव्स आर एक्चुअली सुपरपोजिंग एंड इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर. Now, Huygens' geometrical system exactly explains all the basic phenomena that we see with light waves, and we can make drawings like figure A to correctly predict the movement of the wavefronts in this reflection as well, diffraction, interference, and the straight line propagation of light over here. Now, light is a wave. Kaise? And what's the evidence that light is a wave? That two interference pattern produced by diffraction and Young double two slits experiment both required the superposition of wave. जब दो वेव सुपरपोज करती हैं, वो कंस्ट्रक्टिवली भी मीट करेंगी किसी पॉइंट पे, फिर किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, फिर कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, फिर डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी. तो वो डिफरेंट पैटर्न एक प्रोड्यूस कर देते हैं. जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमें ब्राइट रीजन नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, देखो जैसे यहाँ पे, these are the dark regions. These are the regions where the destructive interference took place. ये हमें possible दे रहा है that light is a wave. क्यों? It is behaving as a wave because उसके repeating cycles of displacement है. The constructive and destructive interference gives different patterns of antinodes and nodes. Antinodes कौन से होंगे? Maximum points, जिनको हम maxima कहते हैं. जब कोई वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर वो बनाते हैं मैक्सिमा. मैक्सिमम यानी कि एंटी नोड्स, मतलब कि ब्राइट रीजन्स. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जब डिस्ट्रक्टिवली दो वेव्स मिलेंगी, वो मिनिमा प्रोड्यूस करेंगी, विच इज अ डार्क रीजन, और जिसको हम सिर्फ नोड्स का नाम भी देते हैं. ये नोड्स होते हैं ना, बिल्कुल जो पॉइंट जीरो के ऊपर होते हैं, इफ दे सुपरवेज इन बिल्कुल. दैट वे. Polarization is also another phenomena that is exhibited by electromagnetic waves, including light. तो ये they can be explained in a classical physics by using the idea of waves. But sometimes light acting as a wave तभी होगा when it is also acting as a particle. Hendrix Hertz ने कहा था, it was not until the beginning of the 20th century that an adequate explanation of the phenomenon was made. What was the phenomenon? Light acting as a wave. Working on the basis of Max Planck's 1901 suggestion that light could exist as quantized packets of energy called photon, उसने कहा कि जो light है, this is just basically what this is, packets of energy. ये different packets है जिनमें energy है, जिनको हम आगे कहते हैं photons. तो photons are basically energy packets. And in English, it's concerning in Heuris's point of view towards the emission and transformation of light as well. आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बहुत चार इंपॉर्टेंट पेपर्स लिखे हैं 1905, इंक्लूडिंग द वन ऑफ रिलेटिविटी regarding as E is equal to mc square. But it was the explanation of the photoelectric effect for which he was awarded the 1921 Nobel Prize in Physics. Crucially, the photoelectric effect जो था वो क्यों नोबेल प्राइज? क्योंकि photoelectric effect बगैर वेव थ्योरी के एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता था. तो दैट प्रूव कि ठीक है यार, लाइट तो वेव है. However, the idea that light travels as particles or photons whose energy is proportional to the frequency it would have considered as a wave fits all the observations exactly. अब लाइट तो फोटोन क्या हो गया? फोटोन को आप डिफाइन कर सकते हो एज एन एनर्जी पैकेट. And for different electromagnetic radiations, the energy of a photon can be calculated
by multiplying the frequency by the Planck's constant h, and this constant has an extremely small value, और इस constant की आपने value याद रखनी है. You have to memorize it. It is what? 6.63 into 10 to power minus 34. वो कहते हैं कि अगर आपने एनर्जी निकालनी है एक फोटोन की, यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्लैंक्स कांस्टेंट विद द फ्रीक्वेंसी. तो आपको बस फॉर्मूला बन जाता है E is equal to hf. Photons cannot have energy values that differ by less than the Planck's constant. This means that there are some energy values that are responsible in our universe as well. For example, a system of quantization. So calculating the energy of a photon of yellow light that has a wavelength of 550 nanometer, तो आप एनर्जी कैसे निकालोगे? E is equal to hf. ठीक है, f है नहीं तो f निकाल लेते हैं. ठीक है, अब f निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? v ओवर लेमडा. अब v भी नहीं है हमारे पास, लेकिन उसने क्या कहा है? येलो लाइट है. येलो लाइट विजिबल लाइट है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल बाय द स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट तो मुझे पता है, विच इज व्हाट? 3 इंटू 10 to power 8 डिवाइडेड बाय 8. वेवलेंथ क्या दी हुई है? 550 नैनोमीटर, मतलब कि 10 to power -9. यहां से निकल आया एफ. तो एफ का वैल्यू मेरे पास आ गया था 5.45 इंटू 10 to power 14. ठीक है, ये आ गया एफ. अब आप एफ को मल्टीप्लाई कर दो प्लैंक्स कांस्टेंट से, विच इज 6.63. ये आपने वैल्यू मेमोराइज करनी है, इंटू 10 to power -34. दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ द एनर्जी फॉर फोटोन. गॉट इट? सही. Now, experiments that produce ions can also demonstrate electrons behaving as particles because a fixed lump of mass and charge is removed from the atom in order to change the atom into an ion. The charge to mass ratio is a unique identifying properties of particle and was first demonstrated for the electron by J.J. Thomson and Robert Millikan in an experiment finally published in 1930. Took this one step further to find the electron charge itself. The fact that the electrons hold a fixed amount of charge and a mass indicates that they are localized particles. And particles is also based on particulate theory having a fixed mass. Now, electrons are waves. Matlab, if electrons are made to travel at very high speeds, they will pass through the gaps and produce a diffraction pattern as well. वो भी अगर गैप से पास करें फैलेंगे. और diffraction किसकी प्रॉपर्टी है? वेव्स की. मतलब electrons are also acting as waves. They will also interact with the double slit apparatus to produce the interference pattern seen when waves pass through two slits. Diffraction and interference are not expected by classical particles, as they should simply travel straight through the slits. Observation of these experimental results proves that electrons can behave as waves, क्योंकि वो diffraction भी कर सकते हैं और interference भी कर सकते हैं. बट वेव्स या फिर पार्टिकल्स को एक चीज तो डिसाइड करो. अब experimental observations highlighted in this section that suggested that both electrons and electromagnetic radiation seems to have contradicted our explanations of them. बहुत से physicists have good theoretical descriptions of the wave and particle natures for electron and also for electromagnetic radiation, but however, we still do not have a complete and a perfect single theory that explains both correctly for either electrons and EM radiation. But proof कर सकते हैं कि अगर लाइट है, लाइट का एविडेंस क्या है कि वो वेव है, क्योंकि वो डायफ्रैक्ट कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, एंड इट कैन पोलराइज एज वेल. और क्या एविडेंस है कि लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल्स? क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स वेव्स हैं कैसे पता लगता है? क्योंकि डायफ्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं कैसे पता लगता है? क्योंकि वो आयनाइज कर रहे हैं. So the idea that these things behave as waves under certain circumstances and as particles under other circumstances is known as wave particle duality. So what is this wave particle duality? कि अगर आप लाइट को लो और आप इलेक्ट्रॉन को लो, लाइट कुछ कंडीशंस में एज वेव भी बिहेव कर रहा है और कुछ कंडीशन में एज पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ कंडीशंस में एज अ वेव बिहेव कर रहा है एंड एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज wave particle duality. Got it? जी. What are photons? Packets of electromagnetic radiation where the amount of energy E is equal to hf, which is the Planck's constant multiplied by the frequency of the radiation. The quantum unit that is being considered when electromagnetic radiation is understood using a particle model. Quantization is a concept where there is a minimum smallest amount by which a quantity can change. और wave particle duality मैंने आपको ऊपर अभी explain कर दिया है. Is it clear? जी.